There is no option to share PPT. Just let me copy paste. So you can share the screen. There is a share option. So could you share the screen? Yeah. So in Microsoft Team, there is some problem. So Chrome tab is is it visible now? Yes, yes, yes. Yes, sir. Yeah. So I will first tell 2-3 minutes about Titan Capital. So we invest in early stage company. So early will be too late, in fact. So better will be at seed stage. And in seed stage also comes pre-seed stage. So pre-seed means you have an idea, you have got team, and you just want to start up. So you can pitch to us. So half of the deals we do, generally there is no revenue, there is no product. It's just team and idea and plan. But half of the deal we also do when there is already a year of traction and some progress already made. So that is called generally when there is no product, more no revenue, and you go out in market to raise from friends and family, then that is called pre-seed round. So we specialize in that. So Titan Capital is famous for that. All the company you see which are now big now in market like Ola, Urban Clap, Mama Earth, Pepper Content. So today, in fact, I am in office of Pepper Content. It is created by uh, uh, they were in their third or fourth year of college at BITS Pilani, and they started Pepper Content when they were still studying, and we are their first investor. So today we have their board meeting, so I am in their office. So many other companies we have done where we were pre-seed round investor like Razor Pay, Off Business. All the companies we were in their first round of investment. And recent ones you can see in consumer brand like Juke, Jiva. Also, we were first round investor. So I wanted to make it clear that Titan Capital, you guys can also reach out when you are passing out or you are in your final year, and you can pitch to us,
and we will be happy to review your business plan. So we come very early in your journey of business building. We are not those VCs who come at generally Series A, Series B. We are pre-seed round VC. So the example I gave, that I am sitting in Pepper Content Office, which also we did when they were still in their, they started when they're in their third year at BITS Pilani, but they met us when they were in their final year, and we invested when they were still in their college. So such a coincidence that today only this session is there at IIT PHU. So this is all about Titan. Next, we will move to the topic of my session, which I have been creating content since last 1 or 2 years, but never got opportunity to discuss and present because obviously this topic in itself is uh, very interesting, impactful, but confusing also. So I wanted the content to be perfect. So now my content is ready, and it is very small. It's not very long, but it is very precise. So you can see what is Gibbs equation. So most of the people here in audience would be knowing good chemistry because you are in IIT BHU. So, but I will start from business side, which is spontaneous investment reaction. So people keep asking me how Titan takes such a fast decision making for investing. What is your secret sauce? What you look at? So everyone is knowing in market that what all things are important, which is same for all VCs, which is team, time, and unit economics. So team means how excellent the team is, and TAM is how large is the market, and then unit economics means what is margin profile of your business when you are selling a product, how much money you are making, and how much uh, EBITDA means profit, how much profit your company will be making after selling X products or X set of solution to Y clients. So that is called total profit you are making, which in business terms are called EBITDA. Okay, so you just try to understand from profit point of view, so that it's the profit which what company is making. So 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 I have tried to connect the investment decision making process which with a chemical reaction. So a chemical reaction which is going forward. We generally intend that chemical reactions should be going forward only. So a chemical reaction which is very strong, which is very fast, which is uh, very powerful, they always moves forward. A chemical reaction which is weak, then half of the reaction will be going forward and half of the reaction will getting backward also. So reactant से product बनता है, तो product से reactant भी टूटते रहता है. So in that process, that chemical reaction is called weak chemical reaction. उसी में एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी आता है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है उतना ही बैकवर्ड आ रहा है. So then net your product and reactants are stagnant. So there are three conditions. One condition is very strong reaction, मतलब कि उसमें ऐसा होता है रिएक्टेंट का जन्म ही हुआ है प्रोडक्ट बनने के लिए, and the environment is so supportive and so synergic that it is going in forward direction only. That is called fast irreversible forward reaction. This is one type. Second is like forward जा रहा है but backward भी आ रहा है, and eventually reaction is very weak and it stops because जितना सामने जाता है उससे ज्यादा पीछे आ जाता है. Then again reactant से प्रोडक्ट बन के सारे प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाते हैं. Then your reaction is not successful, it's weak. So this is second type. And second and third type is both are equal. सामने गया उतना ही पीछे आया. Forward is equal to backward. So you have attained an equilibrium. So people who are already good at chemistry, they would have understood very well. But I'm explaining more to give proper context for people who are maybe from maybe economics genre, maybe from mathematics genre, maybe from com science. Okay, because most of you are still student at IIT BHU. I'm trying to give full context. So uh,
I'm trying to explain you guys in very simple form. इससे simple नहीं हो सकता. So coming back to the, I have created a very small word doc, not even PPT. So जब आप business बनाते हो तो ऐसा ही आपके बनाने से ज़्यादा this topic is more about being a VC and how we judge a business plan, a business proposal. So our statement is very clear. And we decide very fast. So that's what we have termed as spontaneous investment reaction. Decision word को मैंने reaction बोला है. People ask, people इतना fast आप लोग decision कैसे करते हो? Like in a year you are doing 20-30 investments and you are seeing maybe 2,000 companies in a year, and out of that you are investing in only 20-30 companies. How? So the answer is we only invest in a business where we see where we see sufficient evidence of spontaneous, irreversible forward reaction, not backward. And that contributes to our phenomena of spontaneous investment reaction. Okay. So, and there is also a concept of product market fit, PMF. जितना ज्यादा आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और इरिवर्सिबल होगा, और वो केमिकल रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना सॉलिड प्रोडक्ट बनता है. अभी केमिस्ट्री की बात में बता रहा हूं मैं. केमिस्ट्री में जितना फॉरवर्ड आपका रिएक्शन जाएगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनता है आपका. ठीक है. उसी तरीके से when you are building business, either you are creating a company like Mamaearth, or you are creating a company like Razorpay or Mo Engage or Credgenics or Urban Clap, your product, software product, or your consumer brand product, D2C product, or your or some other kind of solution you are building, or a payment gateway or a payment solution. So that solution in the form of software product or consumer product will be as solid, as as stellar, um, if your reaction of the process is spontaneous, always forward looking and irreversible. Irreversible मतलब वो पीछे नहीं आ रहा, आगे ही जा रहा है. यानी कि लाइफ में आप आगे ही बढ़ रहे हो, ग्रो ही कर रहे हो. So that is the gist. So your real product market fit will happen if your reaction is spontaneous. Reaction मतलब कि जो आपने जो बिजनेस बनाया है उसका बनने का डायरेक्शन फॉरवर्ड हो. So now I will try to correlate, I will break it down further and try to correlate again. Is my screen visible? The document I am presenting, is it visible? Yes, sir, it is visible. Yeah. I'm not much familiar with Teams. I generally do at on Zoom. So if anyone will be having any question, they can write in chat, right? Yes, Or sir, they if can write it in chat, or they can also raise their hand. We'll unmute them. cool. So we will start Q&A after maybe 10 minutes, 15 minutes. All right, sir. Then it will become more clear for all the audience here. I'm just trying to figure out if folks from my team have also joined as audience. For the first time, I'm covering this topic. Cool. So we will move to the main critical part. I want to know, I want to interact with audience. How many of you have heard about gives free equation? Can you write in chat? All the folks, can you write in chat? You can just write like 1 plus 1 plus 1, I will count. How many of you have heard about gives free energy equation? Accordingly, I will cover that slide. Yeah, perfect, perfect. Everyone, please write +1. I will just count. It will help me increasing the depth of the session. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, nice. Almost 30 plus. Perfect, perfect.
So I have created right content for you guys. My team was telling Bipin it is getting too geeky, and that is the reason I was not able to present this content to anyone. I was so much, मैं तड़प रहा था मैं कहाँ पे इसको present करूँ. So IIT BHU has given me that uh, platform. So chalo, let's jump on this. So it's very simple. Delta G equal to delta H minus T delta S. So what is delta G? Delta G is gives free energy. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन केमिस्ट्री टर्म्स, फिर हम लोग बिजनेस में आएंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है, इसमें किस टर्म को मैंने क्या बोला है वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. यस. सो gives free energy is the energy available to do the work. It is used to determine whether or not a reaction is spontaneous. अभी जो मैं लेक्चर दे रहा था, the reaction should be spontaneous. तो डेल्टा जी ही बताता है स्पॉन्टेनियस है या नहीं. और कैसे बताता है? डेल्टा जी का जो आंसर आता है अगर वो हाईली नेगेटिव हो, जैसे कि माइनस डेल्टा जी इज सपोज -100, -200, -300, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना उतना स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन. इफ डेल्टा जी इज से 10 in one case, in other case delta G2 is -300, so -300 is better because +10 is plus, वो तो बहुत ही वर्स है. उस केस में रिएक्शन वीक होता है and it doesn't go forward, it either it is equilibrium or it comes backward, so that is not good. Similarly that reaction is not good for business, यानी कि आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए डेल्टा जी आपका सिग्निफिकेंटली नेगेटिव नहीं है. So delta G should be highly negative. So -300 is preferred over -100 and also preferred over +10 or +100. So -300 is better. -900 will be further better than -300. तो ये आपको समझाया मैंने. Then delta H is again एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए. और फिर उसके बाद डेल्टा एस कहा जाता है इंट्रोपी को, विच इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन सिस्टम. सिंपल है. तो डेल्टा एस जितना भी देखो ये इसलिए रिएक्शन है क्योंकि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, जितना ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज माय स्क्रीन विजिबल? कैन समवन रिप्लाई? हेलो प्रियदर्शनी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. It's good. सो डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगा? या तो डेल्टा एच नेगेटिव हो या फिर कम हो इसका क्वांटम, इसकी मैग्नीट्यूड. और टेम्परेचर जितना हाई होगा, जितना बड़ा होगा, टेम्परेचर जितना पॉजिटिवली हाई होगा, -T डेल्टा एस उतना ज्यादा नेगेटिव होगा. और ये टर्म जितना ज्यादा नेगेटिव होगा -T डेल्टा एस, डेल्टा जी भी उतना नेगेटिव होगा. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस. फिर डेल्टा एच जितना हाईली पॉजिटिव होगा, that will interfere in delta G becoming highly negative. Suppose if delta H is plus 10,000 and this T delta S is 5,000, तो ये 5,000 में माइनस लग गया तो -5,000 हो गया. और डेल्टा H अगर +10,000 हो गया तो टोटल तो +5,000 हुआ ना. तो एंड डेल्टा G need to be negative highly for a reaction to be spontaneous, but this is plus 5,000. It means this reaction will not go forward, it will go backward. सिंपल है. सिमिलरली मान लो ये -T डेल्टा S 5,000 है तो माइनस लगा दिया तो -5,000 हुआ. पर डेल्टा H है ना, मान लो 1,000 है तो 1,000 - 5,000 is -4,000. It means delta G is highly negative at -4,000. So reaction will be significantly forward and spontaneous. Cool. So this is chemistry terms. अब आते हैं हम लोग बिजनेस टर्म में. इसमें अगर आप देखें तो मैंने इस रिएक्शन में मैंने डेल्टा जी डेल्टा एच मैंने कहा है
द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो हमारे केमिस्ट्री वाले टर्म में था, इसको मैंने कहा है बिजनेस टर्म्स में जो हम लोग स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट रिएक्शन कह रहे हैं, विच इज टॉपिक ऑफ दिस सेशन। इन्वेस्ट स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट रिएक्शन मतलब spontaneous investment decision. So basically spontaneous is same. If I am telling you spontaneous chemistry में हो गया chemical reaction, same thing I am telling you spontaneous investment decision. So reaction बन गया decision, chemical बन गया investment, और spontaneous रहा. So ideally the topic of this session should be spontaneous investment decision. बट मैंने थोड़ा तोड़ दिया उसको, स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट रिएक्शन बोल दिया मैंने. बट रिएक्शन इज नथिंग बट डिसीजन. तो एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है. तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं टीम, उसके बाद मार्केट साइज. मार्केट साइज को बिजनेस टर्म में टैम भी कहते हैं. टैम मतलब होता है टोटल अवेलेबल मार्केट, कितना बड़ा मार्केट है. तुम बोलोगे कि मुझे है ना मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, तो इसका टाइम बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल एवरीवन इज बाइंग, स्कूटी, नाउ कार, एंड लॉट ऑफ न्यू other mode of transports are also getting into electric vehicle. But at the same time अगर तुम ये बिजनेस प्लान लेकर आओगे कि मुझे है ना, मुझे अभी सोलार चार्ज्ड एयर टैक्सी बनाना है, उसका मार्केट अभी बना नहीं है, क्योंकि एयर टैक्सी का भी लाइसेंस नहीं मिला है इंडिया में. सो टाइम इज वेरी स्मॉल. तुम अगर टेक्नोलॉजी बना भी लोगे, या फिर तुम जिन्होंने बना ली उनसे तुम लाइसेंस भी करोगे, या फिर और यू डू ए मॉडिफिकेशन ऑफ दैट, then also the market is not ready to buy air taxi. So that's why your total available market is less. ठीक है. So that is called time. तो एक एक टीम में हम, एक बिजनेस में हम टीम देखते हैं, टाइम देखते हैं. तो ये जो डेल्टा एच है, जब आप बिजनेस बनाते हो तो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है जनरली. ठीक है. तो आपको कंपनी में पैसा लगाना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड द कैपिटल यू नीड टू बर्न, यू नीड टू इन्वेस्ट. जो भी इन्वेस्टर का पैसा आता है उस बर्न को मीट करने में जाता है, बिकॉज योर कंपनी इज either building product or your cost is more than revenue. So you are generally making loss for first 3 to 5 to 7 years. So investment, whatever you are raising, it goes to meeting that burn. So that's why that money is called energy of activation. यहाँ मैंने कनेक्ट किया है इसको. डेल्टा एच को मैंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट टर्म्स में कैपिटल बर्न कहा है, जितना पैसा आपको चाहिए उस बिजनेस को बनाने में. ठीक है. देन टी जो टेम्परेचर होता है केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पे वो चीज, केमिस्ट्री में टेम्परेचर, यहाँ पे उसको मैंने टीम कहा है. टीम की क्वालिटी, टीम की क्वालिटी कैसी है, जितनी अच्छी टीम की क्वालिटी होगी तो टी का वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा. वेरी सिंपल. टीम जितनी अच्छी होगी इट विल बी हाईली पॉजिटिव. तो उसका डेल्टा एस अगर छोटा भी हो, टीम अगर बहुत अच्छा हो, तो ये माइनस टी डेल्टा एस ह्यूजली नेगेटिव हो जाएगा. और डेल्टा एच मैंने बोला था कि कितना रुपया चाहिए उस बिजनेस को बनाने के लिए. तो जितना ज्यादा पैसा चाहिए उस बिजनेस को बनाने के लिए, उतना खराब है वो बिजनेस. हमें तो ये देखना है ना, कितने कम पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, कि 2 साल ही कंपनी लॉस में, थर्ड ईयर से प्रॉफिटेबल हो जाए. तो डेल्टा एच जो है, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, द कैपिटल यू नीड टू रेज फ्रॉम इन्वेस्टर टू बर्न इन मीटिंग योर कॉस्ट इन इनिशियल ईयर्स ऑफ योर बिजनेस शुड बी एज लो एज पॉसिबल. जितना कम, जैसे मामा अर्थ विच वेंट फॉर आईपीओ रिसेंटली, it burned very less amount of money in comparison to many other unicorns you see in market. So Mama Earth kind of business, delta H is very low. The energy of activation is very low. The capital you have to burn is very low. So that kind of business is more attractive. ठीक है. तो ये जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जितना, क्योंकि हमें ये पूरे टर्म को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को नेगेटिव रखना है, यूजली नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव टर्म है तो उसकी मैग्नीट्यूड को कम रखना पड़ेगा. उसी तरीके से टी डेल्टा एस जो है, इसके मैग्नीट्यूड को हमें बहुत बढ़ाना है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है. तो ये एक एक पॉजिटिव अमाउंट है जो कि कम है इसकी वैल्यू, और माइनस टी डेल्टा एस एक नेगेटिव, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा. सो आपको डेल्टा एच का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर और टीम का भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया. डेल्टा एस क्या है?
Delta S is very simple. In chemistry, it is called entropy in chemistry. कि कितनी डिसऑर्डरनेस है उस केमिकल रिएक्शन में. तो जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है उतनी ज्यादा फायर ऑलरेडी है उस रिएक्शन में. उसी तरीके से डेल्टा एस को हम कहते हैं मार्केट की साइज कितनी है. जो बिजनेस आप बना रहे हो, जो बिजनेस आप लॉन्च कर रहे हो, उसका साइज कितना बड़ा है. How big is that business and how pressing is that problem statement. So that's why if that problem is so big, the problem is so real, like beauty at home was a big problem 7 8 years back. Urban Clap came and started up and they solved this problem. नहीं तो आज आज आप दिल्ली मुंबई गुड़गांव बैंगलोर में हो तो घर पे बैठ के आप हेयर कट ले सकते हो. For men's also, and for female obviously it is primarily focused on female, but for female they used to go to parlor and spend a lot of money, and it used to cost them not only money but time also while going to the parlor. Now Urban Club is doing that at home. Again, the paint business they have started, there was huge arbitrage. Painter पैसे तो लेता ही था but काम कभी ढंग से नहीं होता था. So Urban Club solved that big problem. So that's why we call how big is the market, which I already explained about in form of TAM, total available market. So delta S जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा मार्केट है आपका, डेल्टा एस को हमने डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया है उसको. बट डेल्टा एस इज नथिंग बट हाउ बिग इज द मार्केट, द टैम. तो टैम जितना बड़ा होगा डेल्टा एस को उतना बड़ा करेंगे, तो माइनस टी डेल्टा एस उतना ही यूजली नेगेटिव होगा. और डेल्टा एच मतलब अगर आप जितना कम पैसा लगता हो धंधा बनाने में तो आपका उतना कम हुआ. मान लो 2 करोड़ रुपए लगते तो ये अमाउंट 2 करोड़ ही हुआ. वही अगर ये अमाउंट अगर 100 करोड़ लगता है आपको, एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में तक आपको 100 करोड़ बर्न करना पड़ेगा. So then this 100 crore might be higher amount than this minus T delta S. Then delta S will become positive, and that means this reaction is not spontaneous. It is a reversible weak reaction for this. And in business term, it's not a spontaneous investment decision. It's a bad decision. So we will not invest in that. So we only invest when delta G is usually negative, and delta G is nothing but uh, in business terms, it will be again this T we can tell team, and T equal to team, and this is multiplied, and this is S equal to TAM, market size. So okay, so I think it's very clear. So if capital burn is low, team is very solid, and TAM is very high, so your minus T delta S will be hugely negative, and this will be low magnitude such that this will be bigger than this. Minus T delta S will be more negative than the positive magnitude of delta S, and delta G will become negative. And it means if your reaction is if delta G is coming negative, then uh, so as negative as it can be the value of delta G, then your business will be highly spontaneous, highly viable, highly practical, and highly spontaneous. And in those business, we prefer investing. It's as simple as that. So I've tried to cover it in very simple form. Someone has written that document is not visible. Was that not visible? Sir, it is visible. It is visible. Someone wrote in chat. Okay, cool. Huh? ठीक है. Great. So I am open for question because question will clarify, further, and I will also get to know कि सबके bounce तो नहीं कर गया.
लोगों को समझ में भी आया है नहीं? Please feel free, don't hesitate. If you have any queries, please raise your hand. Otherwise, chat box will be, you can write them. Hello, Bipin sir. Hemant this side. Hi Hemant. Sir, I just wanted to ask that delta H and delta S, which are the total market size and capital burn, they are the qualitative terms, and delta T is the qualitative term. So, how do you judge the qualitative term and use it as a quantifiable number? Yeah, very good question. But you got the main part of what I am calling delta G, what I am calling delta H, Yeah, E yeah, I delta. got. वो सब क्लियर हो गया, इक्वेशन भी क्लियर हो गया. Equation clear, sir. आई होप बाकी लोग को भी क्लियर हो, क्योंकि वो समझाने में मैंने काफी एफर्ट डाला. तो ये बहुत ही अच्छा I क्वेश्चन still है have कि बिपिन आप. economics major, so I think अगर मेरे को understand हो गया तो फिर. ठीक है, I will take little bit of credit. I try to make it very simple. Do you agree or not? Yeah, sir. Agree. मैंने लिख भी रखा है कि किसको क्या बोला है. सो ठीक है. सो नेक्स्ट इज, देखो मार्केट साइज तो हम निकाल लेते हैं, सारे कॉमर्स एमबीए ग्रेड्स वो लोग निकाल लेते हैं. फिर कितना पैसा चाहिए वो बिजनेस बनाने में, वो भी फिनेंशियल मॉडलिंग से निकल जाता है. बट टीम को कैसे पहचानते हैं? एंड देयर देयर कम्स द रोल ऑफ ए वेंचर कैपिटल. हाउ गुड दैट वेंचर कैपिटलिस्ट इज. डू दे नो टू आइडेंटिफाई राइट पीपल? तो जनरली हम टीम में, आई पर्सनली लुक फॉर, इट्स अ वेरी लाइक क्वालिटेटिव टर्म. इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. बट हमने उसका भी एक एल्गोरिदम बनाया है. बट दैट इज, दिस मीटिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट. बट उसको आप इस टर्म्स में समझ सकते हैं. वी लुक फॉर फायर एंड स्पार्क इन टीम. So the team need to be very smart, very hardworking, and very good feedback about them from integrity point of view. They need to be we need to be sure that the guys we are investing in are very high on integrity. अब आप पूछोगे ये कैसे पता करते हो? If you are still fourth year student in your college and we are looking to invest, then we will figure out our common network in your college. Maybe someone from IIT BHU uh, is interning with us already, maybe, or interned with us in past. Maybe a founder who is from IIT BHU who passed out 2 years back is having some network in college still and can reach out to you if you are pitching to us and we want to know about you and your fourth year student in your college. तो उससे काफी रेफ चेक से पता, जैसे आप कॉलेज में आप इंडिपेंडेंट बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ई सेल होता है, फिर कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट होता है, इन सब में भी व्हेन यू आर लुकिंग टू बिकम प्रेसिडेंट इन योर फाइनल ईयर, देन लॉट ऑफ रेफ चेक हैपेंस. देन आपके बारे में पूरी कुंडली निकाल लेते हैं लोग कि आपका क्या बिहेवियर है, व्हाट योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट यू. सो दोज थिंग्स रियली मैटर्स. तो वो हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है. एंड देन वेदर यू आर हार्ड वर्किंग और नॉट, ये कैसे पता चलता है? जनरली हम लोगों का पास देखते हैं. इधर दैट पर्सन नीड टू हैव वन स्पाइक इन लाइफ. ओके, एक स्पाइक मतलब जो हम लोग सीवी में भी कहते हैं ना, फॉर गेटिंग टॉप शॉर्टलिस्ट ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट, you need to have one spike. It can be anything. If you are still a student on campus, then we will see that what all stuff you have done in your college. Either you should be great in your academics, or you have run some independent body, some organization in college, some clubs in your college, and you became president in its final when you are like in your third year or fourth year. Because in first year you become just part of organizing committee. You are like bottom of the pyramid. Have you raised the ladder and come at the top? Or maybe you're just good at academics. You are starting a someone asked this question that do we fund in uh, like bio startup, biochemical startup. So if you are great at biochemistry and you have done great projects at college and you have created something, um, like if you have created something which is a
like of huge impact and huge commercial value. Okay, using biochemistry. So maybe some biodegradable fuel or some fuel made from bio waste, blah blah, which now people have already figured out. Maybe more stuff, more innovative stuff, or some low cost or high impact drug you have figured out and you are looking to take license and market, and you are great at your lab work and your academics. You don't need to be president of any cultural fest or any clubs in your college. So we need to see just one spike. Suppose you have already passed out, because now I can see 70 people have joined here and none of you are starting up when you are passing out, but you want to start up after 5 years of passing out. उस समय हम लोग देखते हैं कि आप आईआईटी बीएचयू में थे या फिर किसी और आईआईटी में थे या फिर किसी और कॉलेज में थे. So IIT will definitely be counted as one spike, but let's assume you are from any private college. Let's assume private college, and that also tier 2, not tier 1, but you have done great in your those 5 years of your career. You have joined a startup and you have raised ladder, and that startup has also grown and you have also become one of the leader in 5 years of your employment there. So we consider that as one of the spike, one of the very important spike. So those things we use in our method of evaluation, but still venture capital is, I will say, 50%, 50 to 70% art, and just 30 to 40% science. I have tried to convert everything into 100% chemical reaction and chemical reaction equation, and trying to make it as scientific as possible. बट जो तुमने टीम वाली सवाल पूछी ना, वही वो आर्ट वाला पार्ट है. बट इसका भी मैंने तुमको 10 मिनट में काफी आई ट्राई टू कवर इट इनटू लाइक मैथमेटिकल फॉर्म. बट उसको कैसे मेजर करते हैं वो एक्सपीरियंस से ही आता है. बट सम लॉजिक आई गेव यू. दिस इज मे बी 30% of the logic we use, rest 70% comes from experience and more thing to discuss. And sir, one follow-on question would be, sir, how did you calculate the total aggregate market size of urban clubs, since that was an unorganized sector, like painters and all, cut salon. No, you can do that mathematics, like how many people go for haircut, or how many girls, females go to salon for beauty, cosmetics, all the work. So all the data were always available. There are a lot of organized salon in India, in in metro and tier 1, tier 2 cities. Those numbers are available, but many people in rural area, they get it done at unbranded salon and places. So those data also, all the consulting company, they try to take an approximate number to come up with a overall number. So those numbers were always available, just that there will be 2 3 components in those reports, that X% of this is organized between those chains of salons, and 100 minus X% is unorganized. ठीक है, और उसमें फिर एस्टिमेशन होता है इन अनऑर्गेनाइज में कितने और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे. देन अगेन दैट इज द वर्क ऑफ कंसल्टेंट टू डू एस्टिमेट्स एंड ऑल. बट हम लोग वी डोंट हायर कंसल्टेंट. वी जस्ट टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ आवर इंस्टिंक्ट. हमें ये लगता है कि अब ये ग्रो करेगा. लोग लोग बेसिकली ब्यूटी एट होम घर पे लेना चाहेंगे. जब आपको दिख जाता है लेना चाहेंगे और अभी है ही नहीं, then you there is always growth only. You go north only from here, you don't go south. You grow only. जब पता है अभी घर पे ब्यूटी एट होम है ही नहीं अच्छा ऑर्गेनाइज हाई क्वालिटी, इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होगा, you have a reviews mechanism and you can see reviews and then book those folks only who have high reviews to come at your home and do your beauty work. So उसका एक estimation आप ले सकते हो. And especially for us, when we invested 10 years back, when there was no good brand sending their service provider to your home to do beauty at home, उस समय तो कुछ भी नहीं था. Now there are many other brands also.
and it is easier for us to take bet. हम जनरली ब्लू ओशियन बेट लेते हैं जिस समय वहां पे कोई नहीं हो और हमें वो प्रॉब्लम दिख रही है, then it's comfortable for us to invest in that company. So in that case our delta G is highly negative, that reaction is highly spontaneous. Thank you, sir. See, I will take one more question. I think someone has written, Chris Sood has written, sir, how is it just that if a certain company has a PMF or not? Like, is there a quantitative criteria that can put them back into that bracket? मुझे लग रहा है यही है, डेल्टा जी है, दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू क्वांटिफाई. अगर एक कंपनी का टाइम बहुत बड़ा है, टीम बहुत अच्छी है और दिख रहा है कि कम पैसे लगा के आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दे रहे हो, ठीक है, तो यही है क्वांटिफिकेशन. अब पता कैसे चलता है कि पीएमएफ हो गया है? पीएमएफ मतलब सिंपल है कि आपको ना एक आपको फीलिंग आने लगती है आपके टीम में कि यू आर कैपिंग आउट. यू आर कैपिंग आउट मतलब कि आपने जो सोचा उससे ज्यादा डिमांड आ रहा है अब आपको, और अब आपके पास लोग नहीं है फुलफिल करने के लिए. इट मीन्स आपका प्रोडक्ट चल पा रहा है, आपका प्रोडक्ट या सॉल्यूशन चल पा रहा है, और अब आपको पुश नहीं करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट सॉल्यूशन को. डिमांड आ रही है, वर्ड ऑफ माउथ हो गई है, एंड यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड. आई थिंक दिस इज द लिटमस टेस्ट ऑफ पीएमएफ. अगर ये हो गया, इसका मतलब आपका बहुत सॉलिड पीएमएफ हो गया है आपका, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव है, ह्यूजली स्पॉन्टेनियस है, और आपका ये पता चलता है कि आपने अ, कितना अच्छा आपने प्रोडक्ट या सॉल्यूशन बनाया है. एंड you will always have, once you start achieving, you will always have more demand than the supply you have already planned. आपका स्टॉक, प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन बेच रहे हो सॉफ्टवेयर तो आपके क्लाइंट्स और कॉलिंग आएगी आपकी कि हमें भी एक सॉल्यूशन चाहिए, बट आपके पास लोग नहीं होंगे एज ए अकाउंट मैनेजर, सो यू नीड टू हायर मोर पीपल देन. So that is called early PMF, first sign of PMF. I think we are running out of time. So maybe one more question I will take, only one. So yes, so that's this question in the chat box. Like, is this from Himanshu? Is this method reliable when the idea is a little bit capital intensive? Yeah, so ऐसा कुछ नहीं है. That's why I am telling you कि डेल्टा एच में ये नहीं बोल रहा हूँ जीरो होगा. डेल्टा एच मतलब कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कितना पैसा लगेगा वो बिजनेस बनाने में. फिर तो डेल्टा जी को ह्यूजली नेगेटिव करने के लिए डेल्टा एच को -10,000 ही कर देते हैं, या फिर वो बिजनेस बनाने के आपको पैसे मिल रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि आप डे वन से आपको ना 10 करोड़ मिलेगा क्योंकि ये बिजनेस में अगले साल ही उतना प्रॉफिट हो जाएगा. ये तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ इट विल बी पॉजिटिव नंबर, बट अमाउंट शुड बी लेस, द मैग्नीट्यूड शुड बी लेस. ठीक है, अगर आपका ये ज्यादा है मैग्नीट्यूड, let's you create, you are creating a drug, you are discovering a drug, you are working in a drug R&D, on a drug R&D idea, and you need 50 crore of delta H, 50 crore of money before you start, 50 crore to develop this drug and start making first revenue, और उसमें 5 साल लगेगा, तो 50 करोड़ हो गया डेल्टा एच, यूजली पॉजिटिव. तो उस केस में ना तुम्हारा टी डेल्टा एच है ना 2,000 करोड़ होना चाहिए, यानी कि टीम मल्टीप्लाइड बाय मार्केट साइज. यानी कि जब बिकना शुरू होगा ना, तो तुम एक एक ड्रग, एक एक लाइसेंस इतने महंगे बेचोगे एक एक कंपनी को कि तुम्हारा अगले 5 साल में 50 करोड़ से, पहले 5 साल में 50 करोड़ जलाया, और दूसरे 5 साल में ना तुमने बेसिकली 2,000 करोड़ बनाया. टी डेल्टा एस बेसिकली तुम्हारा 2,000 करोड़ है मान लो, ठीक है, तो हो गया ना मैच, तो -1950 करोड़ हो गया ना. डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच -1950 करोड़, विच इज ह्यूजली नेगेटिव. तो तुम्हारा अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो तुम्हारा टी डेल्टा एच बहुत बड़ा होना चाहिए. टी मतलब टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, उसी तरीके से टीम मल्टीप्लाइड है, टीम बहुत धांसू होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. डेल्टा एस इज हियर टैम, आपका टैम बहुत बड़ा होना चाहिए. आपके पास ड्रग मॉलिक्यूल खरीदने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए ड्रग कंपनी की लाइन लगी होनी चाहिए, यानी कि वो डिजीज का आज तक कोई ड्रग ही नहीं हो. ठीक है, सो आई थिंक अगेन दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. So we can speak for 5 hours more here,
And but I am sure Priyadarshini is recording this video, and she will try to create some transcript, and I will share with her this two-page Word doc also. And it is part of a long document I had written 2 years back. A part of that I have presented today, and I tried to simplify it further. That's why I copied it in some untitled document which I presented. So I just did this just before this session, and my team was telling Bipin, just don't make it too geeky. And I tried to make it very simple. Hope it worked. And maybe we meet again, and then we capture other part of this long document. So great, thank you. I will share this two-page document, Priyadarshini, on our email thread or WhatsApp group. You can make a transcript and create a Thank you, sir. summary, and then you can share with the broader audience. Okay, thank you, everyone. Bye bye. All the best. Awesome. Thank you. Bye. Guys, if you have any doubts, do share it on the community group. And if you're interested more in the startup space, there are many startup strategy events lined up for the e-summit. So do check that out. It includes like making a whole branding strategy or like investment momentum for a new startup. So the links are live in Unstock. Otherwise, we'll also share it in the group. So up until that, keep learning and be curious. Thank you.